So last class में we had seen the on keyboard events. In this case we had seen the button click event in this, and दो events किए थे. So today's class we will concentrate on the next type of event, that is mouse events in this case. तो mouse events यानी mouse का operation के basis पे you can call the JavaScript functions in this case. तो उसको कैसे call करना है? It's very simple. Let me run the application. So these are the tags. I'll take one more tag in this, that is input type equal to submit. ये सभी को निकाल देंगे. I'll just remove these and I'll keep one function, that is display. Inside this input type equal to submit, name btn submit. मैं क्लिक नहीं करना चाहता, लेकिन द ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड विदाउट परफॉर्मिंग द क्लिक इन दिस केस, क्योंकि बाकी के जो पिछले इनपुट टाइप टेक्स्ट में जो इवेंट्स थे, एवरीवेयर वी हैड टू टाइप समथिंग इन दिस केस. बटन क्लिक में वी हैड टू क्लिक ऑन द बटन टू परफॉर्म द ऑपरेशन. बिना क्लिक किए, दैट इज रिड्यूसिंग द पेन. बटन क्लिक करना टेक्स मोर एनर्जी इन दिस. कर्सर मूव करना टेक्स लेस एनर्जी. So using that, बिना क्लिक किए हम कैसे जावास्क्रिप्ट को कॉल कर सकते हैं? We can make use of the type equal to we can make use of the on mouse event in this case. Sir, we can't hear you. Yes, so I forgot to. Yes, now I hope you can hear me. तो लास्ट क्लास में हमने जो किया था वहां पे क्या है बोलो तो वी वर जनरेटिंग इवेंट्स इन दिस. इवेंट्स कैसे जनरेट होता था? इट वाज आइदर अ क्लिक इवेंट और प्रेस इवेंट इन दिस. तो बटन क्लिक करना पड़ता है या कीबोर्ड में कुछ कीज को प्रेस करना पड़ता है. सो उसके हिसाब से वी वर कॉलिंग द जावास्क्रिप्ट फंक्शंस इन दिस. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि विदाउट क्लिक आई वांट टू जनरेट एन इवेंट, विदाउट प्रेसिंग अ बटन और a key press I want to generate a event, because बटन क्लिक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, कीबोर्ड में क्लिक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए. सो रिड्यूसिंग दैट एंड कॉलिंग द जावास्क्रिप्ट के लिए वी मेक यूज ऑफ द माउस इवेंट्स इन दिस केस. जैसे यहाँ पे मैंने एक इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिया हूँ, तो सबमिट व्हेन आई रन द एप्लीकेशन, यहाँ पे I'll get a button in this case. अभी इसके ऊपर माउस जैसे मैं माउस उसके ऊपर लेके जाता हूँ, आई वॉन्ट द जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू बी कॉल्ड इन दिस केस. तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए, वी हैव वन इवेंट दैट इज ऑन होवर, नहीं तो ऑन माउस ओवर. ऑन माउस ओवर इज एन इवेंट जब माउस किसी टैग, वो जो टैग हम जहाँ पे कॉल कर रहे हैं उसके ऊपर आ गया तो इमीडिएट फंक्शन कॉल कर देता है. so I'll call it as display. तो जैसे ही मैं माउस उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, यू कैन सी किधर भी घुमाओ कुछ नहीं हो रहा. एक सेकेंड के लिए मैं उसके ऊपर लेके गया, आई एम कॉलिंग द इवेंट इन दिस केस. सो दिस इज हाउ द माउस ओवर इवेंट इज कॉल्ड इन दिस. सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करो, आप कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हो. यू कैन इवन चेंज द वैल्यू इन दिस केस. जैसे वो बटन के ऊपर लेके गया, माउस उसके ऊपर है बोल के बताना, आई वॉन्ट टू चेंज द वैल्यू इन दिस केस, आई कैन डू दैट. जैसे इसके अंदर और एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं बाय द नेम id. id इज इक्वल टू कुछ भी डालो, btn submit. एंड अभी ये टैग का जो वैल्यू चेंज करना है, तो वैल्यू चेंज करना बोले तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज document dot get element by id. अगर वो टैग का कोई फीचर्स को आपको यूज करना है, वी मेक यूज ऑफ document dot get element by id. उसके अंदर आप वो टैग का id जो दिए id दे दीजिए. देन यू टाइप वैल्यू प्रॉपर्टी, बिकॉज वो जो वैल्यू है मेरे को वो वैल्यू चेंज करना है. से एग्जाम्पल हियर आई विल गिव वैल्यू एज से सबमिट. सबमिट के बदले में मेरे को वहां पे रिफ्रेश बोल के आई वांट
रजिस्टर बोल के आना। ओके, जब मैं माउस उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इट शुड शो मी रजिस्टर इन दिस। तब क्या करता हूँ, आई नीड टू फेच द वैल्यू प्रॉपर्टी। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और टैग का आईडी जो है, आईडी प्रॉपर्टी दीजिए डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर, सेमीकोलन, save and then refresh, and of course return false नहीं, keep it just the name of the function। save करो, refresh करो, cursor उसके ऊपर लेके गया, now you can see the tag name has been changed। refresh करता हूँ, वापस आता है। so इसके ऊपर लेके गया, it is calling a javascript function in this case, जो वहां पे submit बोल के था उसको चेंज करके register बोल के दे रहा है। got this point? सर अभी मैं माउस यहाँ से निकलते ही वो फिर वापस सबमिट को आना चाहिए। उसके लिए वी हैव अ वन मोर इवेंट इन दिस केस, दैट इज ऑन माउस आउट। ऑन माउस आउट के अंदर मैं और एक फंक्शन कॉल करता हूँ, सेट सबमिट। तो मैं बोल रहा कि फिर वापस सबमिट बोल के एंटर करना उसको, दैट विल बी द नेम ऑफ द फंक्शन इन दिस। इसी को कॉपी पेस्ट करके फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ, and I'll call this as set submit, and यहाँ पे I will say ठीक है। तो अभी क्या होता है, डिफॉल्ट इट सबमिट, इसके ऊपर गया रजिस्टर आ गया, अभी इसके बाहर जाता हूँ फिर वो वापस सबमिट। सो whenever the cursor is on that particular tag, the event will be generated in this case। Got this? इस तरीके से you can change the value of the tag in this case। We have an event called as on mouse over। ऐसे ही कितने हैं, I'll show you this। on mouse बोल के डाल दो, all these are events, that is on mouse over, on mouse out। अभी हम देखें on mouse down, जब भी माउस नीचे आता है, नीचे मूव करते हैं, the event gets generated। on mouse enter, on mouse enter मतलब जब भी आप वो माउस को वो टैग के एरिया में डालते हैं, ऑन माउस एंटर आता है। ऑन माउस लीव, माउस फॉर्म से बाहर निकाल दिए तब ऑन माउस लीव आता है। ऑन माउस मूव, अगर माउस को मूव करे तो ही जावास्क्रिप्ट फंक्शन जनरेट होता है। देन ऑन माउस अप, माउस को अगर अप डायरेक्शंस में मूव करे तो यू हैव द ऑन माउस अप इन दिस केस। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट ऑप्शंस इन दिस। Say let us see on mouse enter। I will call one more function, that is mouse enter बोल के, इसके नाम पे एक फंक्शन क्रिएट कर दो। Say, think it was mouse enter। inside this you can display one message to the user, alert mouse enter। सेव करो एंड रिफ्रेश, कर्सर ऊपर गया, जैसे ही मैं टैग के ऊपर लेके जाता हूँ इट सेज माउस एंटर, वो इट इज कॉलिंग द जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन दिस केस। ठीक है, सो ऑन माउस एंटर बोल के आता है, वो टैग के अंदर लेके गया तो इट विल डिस्प्ले। टैग के बाहर जाते ही आई वांट टू कॉल द अनदर फंक्शन इन दिस केस, so I'll say on mouse, sorry mouse leave। तो माउस लीव बोल के एक इवेंट जनरेट करते हैं, से माउस लेफ्ट बोल के मैसेज डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे ऑन माउस लीव। ऑन माउस लीव में वो फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, सेव करो, रिफ्रेश, अभी कर्सर उसके पास लेके जाना, माउस एंटर आ गया, क्लिक ऑन ओके, माउस को बाहर लेके गया तो माउस लेफ्ट बोल के आता है। गॉट दिस? तो इस तरीके से यू कैन मेक यूज ऑफ द ऑन माउस लीव एंड ऑन माउस आउट इन दिस केस। और एक है ऑन माउस मूव, माउस मूव करे तो फंक्शन जनरेट होना। सो माउस मूव, just you make a movement of the mouse in this case। Say function mouse move, the JavaScript function। तो इसको
ऑपरेशन आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट द माउस कब जनरेट होता है, इवेंट कब जनरेट होता है। माउस मूव, सेव एंड रिफ्रेश। माउस एंटर हो गया। माउस मूव अभी एवरी टाइम थोड़ा हिल रहा है तो इट इज कॉलिंग द माउस मूव। मूव इट, थोड़ा मूव कीजिए, इट विल कॉल दिस केस। ये थोड़ा गेमिंग के लिए यूज होता है। जनरली वी डोंट यूज दीज एप्लीकेशंस इन दिस। वो गेमिंग के लिए वी मेक यूज ऑफ दीज काइंड ऑफ माउस इवेंट्स इन दिस केस। तो ये है आपका माउस मूव इवेंट इन दिस केस। देन वी हैव और कौन सा ऑन माउस अप, वही अगर डायरेक्शन अपवर्ड्स कॉल किए तो अप जनरेट होता है। सेम एज अ डाउन इन दिस केस। ओके, जब आप नीचे माउस को मूव करते हैं, we make use of the I mean on mouse move is generated. Okay, you can write on uh, uh, नहीं, यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न इज यूज्ड व्हेनेवर यू डोंट वांट टू जनरेट द इवेंट। अभी समझो कि माउस एंटर करके मेरे को कुछ ऑपरेशन नहीं करना है। ओके, दैट टाइम व्हाट आई विल से, हियर आई विल कौन सा माउस एंटर के लिए, सो आई विल यूज अ माउस एंटर इन दिस। यहाँ पे आई विल से रिटर्न फॉल्स। कुछ ऑपरेशन नहीं करना है, इन सच केस वी मेक यूज ऑफ रिटर्न फॉल्स। आई वांट टू मेक दिस ऑपरेशन, इसलिए मैं डिफॉल्ट रिटर्न ट्रू कर रहा हूँ। तो जो भी ऑपरेशन वहां पे कर रहे हो वो एक्सेप्ट करेगा। बट व्हेन यू डोंट वांट टू डू दैट ऑपरेशन, रिटर्न फॉल्स यूज करना है। ओके, यहाँ पे आई वांट टू परफॉर्म दोज ऑपरेशंस, सो आई हैव नॉट रिटर्न द रिटर्न फॉल्स दिस। ओके, नहीं, सर्वर को कुछ भी नहीं जाता, इट इज ओनली ऑन द क्लाइंट साइड इन दिस केस। ओके, जैसे मैं एक कर्सर के ऊपर एक मेनू के ऊपर जाता हूँ तो कलर चेंज होना चाहिए, तो वो दैट इज अ क्लाइंट साइड काम करना चाहिए। उसके लिए मैं सर्वर के पास जाके वापस नहीं आऊंगा। से जैसा एग्जांपल, आप क्लास में बैठे, क्लास में बैठ के वो पेज लिखने का खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट पेज चेंज करना बोले तो आप यहीं पे बैठ के चेंज करेंगे या घर को जाके पेज नेक्स्ट पेज चेंज करके वापस आएंगे? यहीं पे बैठ के करेंगे। सच स्मॉल थिंग्स आर दीज इवेंट्स इन दिस केस। तो ये इवेंट के लिए आप हर बार सर्वर के पास जाने का जरूरत नहीं रहता है, तो क्लाइंट साइड पे ही चेंज होता है। गॉट इट? यस, you can write down the heading as mouse events. Mouse events. Under that, first one, mouse enter. Mouse enter generates event. Generates event when mouse enters the given tag. Generates the event when the mouse enters the tag. Second one, mouse leave. Mouse leave generates the event. Generates the event when the mouse leaves the tag. When the mouse leaves the tag. Next, mouse move. Mouse move generates the event. Generates the event when
The mouse moves. When the mouse moves in the tag. In the tag. Next, we have mouse move के बाद mouse on mouse enter हो गया ना, on mouse out, on mouse out generates an event, generates an event when the mouse is moved, when the mouse is moved out of the tag, out of the tag. वैसे ही और दो आते हैं, that is on mouse up, है ना, on mouse up generates an event, generates an event when the mouse moves, moves, moves in upward direction, when the mouse moves in upward direction in the tag, upward direction in the tag. Same thing, on mouse down. एक second, tag name is mouse on mouse down generates an event when the mouse moves in the downwards direction. When the mouse moves in the downwards direction. Okay, so these are the examples of सबका लिखने का नहीं, एक दो चार लिख लिया तो you'll understand the procedure in this. You can write down these events. Display को display भी कॉल कर रहे हैं. You can write down this full program लिख लो.
Still mouse enter. Hmm? Yes, sir. On set submit हो गया है ना? Close the prompt again. This. So these are the on mouse events in this case. हम generally very rare case क्योंकि पता नहीं कल कौन सा आपको यूज करना पड़े. So I'm showing you these events in this case. Right on the next one, the most important, that is Ajax.
तो अजैक्स इज वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जहां पे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वी आर कम्युनिकेटिंग इन द सेम HTML पेज. Ajax is a process where you can even perform these operations in the server in this case. मतलब मैं सर्वर पे उसको रखा हूँ, तो सर्वर पेज से कम्युनिकेट करना पड़े तो वी कैन मेक यूज ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन दिस केस. तो जावास्क्रिप्ट यूज करके सर्वर के साथ अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ अजैक्स इन दिस. ओके. एंड उससे पहले जस्ट वन थिंग इन दिस, आई टोल्ड यू HTML जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ा तो देयर आर टू मेथड्स. वन इज पुटिंग इट इन द HTML पेज इटसेल्फ. दूसरा मेथड है ये पूरा आपका स्क्रिप्ट को कट करो. ओके. क्रिएट अ सेपरेट पेज इन दिस केस. एक नया पेज क्रिएट करते हैं जहां पे भी पेस्ट द स्क्रिप्ट इन दिस. वो बिना स्क्रिप्ट टैग के, नो नीड टू राइट द स्क्रिप्ट टैग इन दिस केस. सेव करना है with with the extension .js. So I'll call it as my script .js. ओके. तो JS बोल के एक सेपरेट फाइल क्रिएट किए. अभी वो ये पेज में यूज करना बोले तो वेरी सिंपल. आई टोल्ड यू सेम आपका स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं. स्क्रिप्ट टैग के अंदर वी मेक यूज ऑफ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज SRC. उसके अंदर फाइल का नाम दे दो. ये ऐसा होगा कि यू हैव यूज्ड हैश इनक्लूड stdio.h conda.h इन सी लैंग्वेज. उसी तरह हम दूसरे फाइल में डेटा को रख के यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग SRC प्रॉपर्टी आई कैन फेच द डेटा फ्रॉम देयर. वर्किंग सेम रहेगा. ओके. एंड टाइप बोल के एक एट्रीब्यूट है आपका, दैट इज टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट. बाद में लैंग्वेज बोल के एक एट्रीब्यूट आता है जावास्क्रिप्ट. काम सेम करेगा. देयर इज नो डिफरेंस इन द वर्क इन दिस. कैन सी रिफ्रेश किया, माउस एंटर हो गया, निकाल दिया तो माउस इट इज वर्किंग द सेम वे इन दिस केस. बट पॉइंट इज यू डोंट हैव अ कोड हियर एंड इट इज ऑलवेज दिस मेथड व्हिच वी वांट टू फॉलो इन दिस. आपका जो भी स्क्रिप्ट के फंक्शंस रहते हैं वो सभी को आप एक .js फाइल बोल के है उसके अंदर डाल दो एंड वो फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना. This is the second method how you can make use of the how you can write a JavaScript content in this case. Okay, write on the second method using .js files. Using .js file. Using .js files. Next line. The script tag defines. Script tag defines an attribute. SRC. SRC, which can be used to access the .js files, which can be used to access the .js files, .js files, which consists of the JavaScript code, which consists of the JavaScript code. And you can write down this line number 4. एंड एक सेकंड बिफोर राइटिंग दैट हम यूजुअली और थोड़ा इसको इम्प्रूव करते हैं. जो भी हमारे .js फाइल रहते हैं वी कीप दीज .js फाइल्स इन अ फोल्डर के अंदर रख के उसके अंदर वो फाइल को डालते हैं.
ओके, तो यहाँ पे पाथ में भी थोड़ा चेंज होता है. दैट इज वी हैव द फोल्डर नेम फर्स्ट स्लैश द फाइल नेम इन दिस. यू कैन राइट ऑन दिस लाइन नंबर 4. एंड ऑलवेज ऐसा मेथड यूज करना चाहिए. तो वो याद रखिए दैट वी हैव क्रिएटेड अ जेएस बोल के फाइल है. वो फाइल के अंदर we have created our JavaScript code in this. जब आप यहाँ पे JavaScript का कोड लिख रहे हैं, no need to write the script tag because anything you write inside this is a script, JavaScript in this case. So this is one more method what we use and generally हम यही method use करते हैं to perform the JavaScript operations in this. Now you can write the heading as Ajax. Under that, the concept of Ajax is used. The concept of Ajax is used is used to communicate with to communicate to communicate between the client page and the server page, the client page and the server page without sharing the whole page, without sending the whole page, without sharing the whole page and restricting it to and restricting it to a specific tag data, restricting it to a specific tag data values to be processed, to be processed, to be processed. तो अभी ये क्या है समझने के लिए व्हाट आई विल डू इज हैव अ रजिस्टर फॉर्म. एक रजिस्टर फॉर्म है. टेक दैट रजिस्टर फॉर्म एंड उसको यहाँ पे यूज करेंगे. Let me refresh the page. Yes, this is my register form. अभी यहाँ पे मैं एक कोर्स सेलेक्ट करता हूँ. तो वो कोर्स सेलेक्ट किया तो आई नीड टू हैव वन अनदर टेक्स्ट बॉक्स विच शुड टेल मी व्हाट इज द कोर्स का फीस कितना है पता करना है. ओके, इन सच केस अभी कभी एवरी टाइम व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर यू क्लिक ऑन सबमिट बटन ये फॉर्म का पूरा डेटा वहां पे जाता है. मतलब एवरी टैग इज सेंट टू द सर्वर इन दिस एंड उसके बाद ऑपरेशन होता है वापस आता है. इट कैन कम टू सेम पेज और इट कैन गो टू अनदर पेज. लेकिन ये केस में मेरे को क्या है, आई वॉन्ट टू सेंड ओनली दिस पर्टिकुलर टैग. सिर्फ ये टैग को मेरे को सर्वर को भेजना है. बाकी का पूरा फॉर्म एज इट इज रहना है. मतलब इट शुड नॉट गो टू द सर्वर. सो टेक वन सिंपल एग्जांपल. आप कॉलेज को गए, जाने के बाद आपको मालूम होता है कि यू हैव नॉट ब्रॉट द नोट्स इन दिस केस. तो जब आप यू हैव टू गो होम एंड यू हैव टू ब्रिंग इट. तो आप अकेले जाएंगे या पूरा क्लास को लेके जाएंगे? क्यों? सिर्फ आपका काम है वहां पे. सो यू नीड नॉट टेक एवरीबडी इन द कॉलेज टू योर होम. जाके तुम्हारा बुक लेके वापस नहीं आना है.
सेम थिंग इज अजाक्स। वो काम करने के लिए अजाक्स को यूज करते हैं। सो वेन एवर आई वॉन्ट टू परफॉर्म सम डेटाबेस ऑपरेशन, क्योंकि मेरे को क्या है बोले तो ये कोर्स के लिए फीस कितना है वो डेटाबेस में है, तो मेरे को सर्वर को जाके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग उसको ये टेस्टिंग ये पर्टिकुलर कोर्स का फीस कितना है पूछता है। द सर्वर पेज विल गो टू डेटाबेस, वो ये कोर्स के लिए फीस कितना है बोल के फेच करेगा, वो डेटा ही हैज टू गिव इट टू द HTML पेज। इतना पूरा ऑपरेशन करने के लिए ओनली द कोर्स नेम इज रिक्वायर्ड फॉर मी। तो सिर्फ मेरे को ये अकेला टैग को सेंड करना है, प्रोसेस करना है, वापस आना है विद द कोर्स फीस। Such cases where a single field has to be sent, एक या दो field has to be sent to the server to perform the operation and come back, we make use of the concept of Ajax. So that is the main purpose. Without refreshing the web page, without sending the whole data to the server page, I want to communicate with the server page. ये तीन कंडीशंस को हम अजाक्स कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, नाउ द अजाक्स फंक्शन कैन बी कॉल्ड ऑन एनी टाइप ऑफ इवेंट्स इन दिस केस। कौन सा भी इवेंट पे आप अजाक्स को कॉल कर सकते हो, लेकिन जब आप अजाक्स का कोड लिख रहे हैं देयर इज वन स्ट्रक्चर फॉर द अजाक्स इन दिस केस, तो वो स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे लिखना पड़ता है। दैट इज ऑफ कोर्स वी स्टार्ट इट इन द स्क्रिप्ट। वो लैंग्वेज और सब ऑप्शनल है, यू नीड नॉट राइट इट कंपल्सरी इन दिस केस। जब आप अजाक्स का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करता हूं, फंक्शन गेट फीस बोल के एक फंक्शन कॉल करता हूं। इसके अंदर आपको अजाक्स को कॉल करना है, वेरी सिंपल, थोड़ा मेथड अलग है। डॉलर डॉट अजाक्स बोल के एक फंक्शन आता है। ओके, डॉलर डॉट अजाक्स फंक्शन, इसके अंदर फ्लावर ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। ओके, इसके अंदर आपको फील्ड्स का कम्युनिकेट करना है। ओके, जैसे वहां पे इवेंट्स है, मतलब व्हेन यू आर कॉलिंग द सर्वर पेज को कॉल करना है, तो वो कॉल करने के लिए बहुत सारे फील्ड्स आपको उसको पास करना पड़ता है। द फर्स्ट फील्ड इज ऑब्वियसली इट इज मेथड। मेथड में आई टोल्ड यू फॉर्म टैग में हम गेट और पोस्ट यूज करते हैं, उसी तरह कौन सा मेथड यूज करके आप अजाक्स को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड वी जनरली मेक यूज ऑफ द पोस्ट इन दिस केस। दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर दैट वी हैव टू पास। सेकेंड पैरामीटर यहाँ पे इट इज यूआरएल, मतलब डबल कोटेशन में यूआरएल दीजिए। यूआरएल में आप सर्वर के अंदर कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, फंक्शन का नाम यहाँ पे देना है। So that will be a double quotation, that is function name। तो कौन सा फंक्शन को कॉल करना है, that is the second parameter that we pass for the URL property in this। तीसरा आएगा the most important, that is the data field in this case। डेटा फील्ड को डिक्शनरी के फॉर्मेट में भेजना है, that is you have name colon value। क्योंकि आई टोल्ड यू whenever you want to perform operation in the database, अगर आप उसको कुछ पैरामीटर्स भेजना है, those parameters we give it in the data field in this case। तो डेटा फील्ड के अंदर हम वो पैरामीटर्स को अजाक्स को मतलब हमारे अजाक्स के थ्रू वो फंक्शन को पास करते हैं। The third and the most important option that we have is success। सक्सेस फंक्शन और ब्लॉक तब जनरेट होता है जब वो सर्वर के पास जाके वापस डेटा लेके आता है, देन वी मेक यूज ऑफ द सक्सेस ऑप्शन इन दिस केस। तो सक्सेस ऑप्शन के अंदर हम जो भी डेटा वहां से आया है वो हमारे HTML पेज में यूजर को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर द 4 important attributes that you should remember, it is passed inside the Ajax call। You can write down these, write down heading as dollar dot ajax open bracket close bracket, dollar dot ajax open bracket close bracket, under that the ajax function, the ajax function
can communicate with the server page, can communicate, can communicate with the server page with various attributes, with various attributes such as such as first one, URL, URL. Under that, this attribute, this attribute specifies the name of the method, the name of the method to be called, to be called in the server page, in the server page, in the server page. Second one, it is not URL, it is type. Second attribute, type. Sorry, not this method case, method के बदले में type. Type. Write on the second one, type. Under that, this attribute, this attribute is used, is used to specify, to specify the name of the method, the name of the method through which, through which the operation, through which the operation is to be performed. Full stop. Continue. Generally, generally, it is set to. Generally, it is set to. Set to post or get. Post or get. Third one, data. Data. It is used to specify. It is used to specify the inputs. Specify the inputs to be provided. To be provided to the server method. To the server method to perform the operation. To the server method to perform the, to perform the operation. Next, success. It consists of, it consists of a set of codes, set of codes returned by, set of data, sorry, set of data returned by
the server page, by the server page. तो सर्वर जो भी वैल्यू रिटर्न करता है वो हमारे पे सक्सेस में आता है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, द डेटा को वी गिव टू द HTML पेज। इसके अंदर एक फॉर्मेट आता है, दैट फॉर्मेट विल सी स्ट्रक्चर को विल सी इट इन द टुमारोज क्लास, टुमारो में मंडे के दिन।